हाय फ्रेंड्स। आज बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। ठीक है। आई हैव सीन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में। ठीक है, बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, कॉल और पुट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं यूजिंग विच यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एंड पोटेंशियली विन इन द मार्केट। नाउ सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, कॉल ऑप्शन जो बाई करते हैं, इट्स जस्ट लेट्स से there is a concert happening in the town. Okay, and the organizers what they have thought is, अगर डिमांड बढ़ता है ज़्यादा कॉन्सर्ट के टिकट्स का, so they will increase the price. So let's say concert is after 1 month. So आप क्या करोगे, आप आज के दिन कॉन्सर्ट का टिकट खरीद के बैठ जाओगे. Okay, now same way it also works as far as call buying is concerned. So let's say if you think that a stock price will increase in the future, so what you will do, you will buy call option for a stock today, and later on, even if the price increases, you will get that stock in today's price. एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस आज 3,000 का बिक रहा है, तो आप एक लॉट रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हो. आफ्टर 1 मंथ लेट्स से रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 4,000 rupees in the market, but because you have entered into this contract, you will get one lot of Reliance at 3,000 rupees only per share, 3,000 rupees per share. और इस फैसिलिटी के लिए आपको थोड़ा बहुत मार्जिन देना, प्रीमियम देना पड़ता है. पुट ऑप्शन उल्टा है. पुट ऑप्शन मान लीजिए सेम वही कॉन्सर्ट का एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक कॉन्सर्ट है, you want to go but you are not sure how good or bad that concert will be, and the organizers are pretty clear. If the demand is not going to be good for that particular concert, तो हम प्राइस गिरा देंगे भीड़ जमा करने के लिए. सिंपल. ओके. नाउ लेट्स से इफ यू आर बाइंग ए पुट ऑप्शन, okay, it gives you a right to sell the concert ticket at your original price even if market price is low. मान लीजिए आपने आज कॉन्सर्ट का टिकट 1,000 रुपये में लिया, बिकॉज द बैंड विच इज प्लेइंग देयर ही इज नॉट दैट मच पॉपुलर. कल को कॉन्सर्ट का टिकट 500 रुपये हो जाता है, बट आपने तो 1,000 में लिया था, आपको तो नुकसान हो जाएगा. बट अगर आपके पास एक पुट ऑप्शन होगा, यू कैन स्टिल सेल दैट at a price of 1,000. So when you should buy a call option, when you think the stock price will rise, and when you should buy a put option is when you think stock price will fall. This is I'm telling from a perspective of a buyer. Now let's say if I am a seller, I am an option seller. Like whatever I do, I usually sell options. I don't buy options because the probability of winning is much higher. Now, let's say if my view of the market is bullish, I know that a stock will go up, I will sell a put option. Okay. If I am bearish, I will sell a call option. So, by understanding these options, you can protect your investment because this acts as a very good tool for hedging, and you can make money in all sort of market conditions. Okay. So, do like, subscribe to our channel, and we'll share more such insights with you. Thank you.